Welcome back. You're watching Newsx with me, Devika Devan. A newlywed couple from Indore, Raja and Sonam Raghuvanshi, had gone on a honeymoon to Meghalaya. They checked out from a homestay in Nogriat on the 23rd of May and then seemingly lost contact with all their family members. On 2nd June, Raja's body was found dumped in a gorge near a waterfall and a machete-like weapon was found nearby. His wife Sonam has since been missing. Before vanishing, Sonam reportedly sent a strange voice message to her mother-in-law, which adds further confusion to the puzzle. In the last voice message, Sonam can be heard short of breath in the recording, and she revealed that she was trekking to this waterfall. The case has gotten murkier later when cops found a stained raincoat. Meanwhile, back in Indore, the family has held a protest during Raja's funeral, demanding a CBI probe and alleging police inaction. A special investigation team is now probing the matter. NDRF and SDRF teams are continuing the search for Sonam in the dense terrains of Meghalaya. The Chief Minister of Meghalaya, Conrad Sangma, has ensured justice and has called for strong action against the murderer. Let's quickly first listen in to the audio. हेलो हेलो हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते और आज तो उपास होगा फिर मेरा तो उपास है ना मेरे को 2-3 बार बोल दिया मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी वही तो तेरी मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे हाँ खिचड़ी बना रही सुबह फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई थी हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में है यहाँ से आज कुछ मिलेगा बाप रे मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम दो तो All right, so there you heard it. That was that last audio call that has now been released where Sonam Raghuvanshi confirms that she was going to a specific waterfall with her husband, and remember, days later his body has been recovered from nearby while Sonam continues to be missing. Joining me in the broadcast is David Lateflang, senior journalist from Meghalaya, Rapunjay Das, senior journalist from the Northeast, and M.K. Meena, former IPS. Let me begin with David Lateflang, if I may. Mr. Lateflang, I want to understand from you, what really is it that has been picked up as far as this particular case is concerned domestically right now in the state of Meghalaya? You are the first anchor actually who pronounced my title correctly. It's Lateflang and you almost got close to it. Thank you. I appreciate that, sir. Yes. Tell me. Yes. Mr. David, I want to understand from you, sir, since you're joining us from Meghalaya, where this case, I'm assuming, is currently taking up a lot of the administration's time, energy and effort to solve. What is it that you have learned so far? What is it that the state administration has shared so far? Because we've now understood a few facts are now clear that the couple was from Indore. They were on a honeymoon and they've been missing since the 23rd of May. The last phone call was to the mother-in-law, to the boy's mother, and the wife has confirmed their location at that point in time. She sounds quite breathless and she says that we're now heading to a waterfall. And beyond that, they've lost all contact. The wife continues to be missing. However, the husband's body has been recovered and in a pretty brutal state. What further information, Mr. David, can you share with our viewers? So, the information is that everybody is totally speculating. It's an incident. It has happened. It has happened, yes, no doubt. But you can't say that there are a couple of news channels, not news, news channels, yes, but it started with Times of India
that it's a crime-prone zone and all of that. It is not true. That is a beautiful place to go and travel, and you can't go there. You can't go there unless you know where you're going. So obviously the police are working really, really very hard, and nobody from the local people can actually say that we know what happened. You understand? Sora, Cherrapunji, the rest of India knows it as Cherrapunji. But Sora is a place of refuge, a place where people come to chill, people come to relax. And the community there knows that there is nothing that will deter them. So it's okay, all of these allegations and all of that, it's all done. No problem. But the fact remains, why don't we stop the media barrage? Let the law enforcement do their job. Okay. And Meghalaya police is one of the finest police. They have solved so many. We have had a case where after Yes, Mr. David, I've understood your point. You're essentially saying that there should not be any sort of unnecessary media coverage or a media frenzy over the matter. However, it is a situation where two people have essentially just gone missing and one person's body has been found. So it is a serious matter. But I appreciate the thought of yours that yes, there should not be any fake news regarding this matter either. I'll come back to you in just a moment. Mr. Sachin Raghuvanshi, a family member of the Raghuvanshi family, joins us on the broadcast. Mr. Raghuvanshi, आपसे ये समझना चाहेंगे, I want to understand from you, sir, what did you make of the audio clip that has been released? Actually, I am the neighbor of Raja Raghuvanshi, and I want to say that here is I just want to clarify, Mr. Raghuvanshi, are you a family member or are you a neighbor? Yeah, I am a family member. I am the neighbor of Raja Raghuvanshi. All right. So when you probably heard that last audio clip of Miss on 23rd of May. Yes. On Dainik Bhaskar newspaper. Have you heard the audio clip, Mr. Raghuvanshi, of Miss Sonam and her mother-in-law? Yeah. I heard the audio in many news channels and on her mother, Raja's mother mobile. I heard everything. So when the family heard that audio clip, did something seem strange? Did something seem a little bizarre? And how long after it did the family try to reach out to the couple again? We were told, Mr. Raghuvanshi, that that was the last call and then the audio got cut off and perhaps the family assumed that they went into a no network zone. But how long after that audio did the family try to get in touch with the couple once again and didn't receive any response? Yeah, can I talk in Hindi? जी sir, please. देखिए क्या है, एक्चुअली मैं थोड़ा क्लियरिफाई कर पाऊंगा. अभी ये जो पूरा इंसिडेंस देखने से ऐसा मालूम पड़ रहा है, पहली बात तो ये क्राइम है और अभी जो मेघालय है वो क्राइम प्रोन जोन है ही. जैसा ये बोल रहे हैं ना, मेघालय इज नाउ क्राइम प्रोन जोन बिकॉज एवरी मंथ समथिंग कुछ ना कुछ वहां पर हो रहा है. जैसे हंगेरियन जो वहाँ के एक फॉरेनर की भी डेथ हुई थी, वो भी एक मिस्ट्री है. और एक कुछ उसके 2 महीने पहले इवन फरवरी में भी एक 41 वर्षीय महिला की भी एक बॉडी मिली थी इनकी, मतलब कोई सफाई करने वाली है. एंड मतलब हर महीने कुछ ना कुछ है वहाँ पर. और ये लोग वहाँ से है ना खबरें लीक नहीं करना चाहते, ये लीक नहीं करना चाहते हैं और ये मीडिया में आने नहीं देना चाहते हैं.
ये तो क्या है, किसी तरीके से पूरी जो मीडिया है इसमें लग गई है, हमारा मध्य प्रदेश प्रशासन लग गया है। तो ये चीजें सामने आ गई हैं, नहीं तो ये सब चीजें सामने नहीं आ पा रही थी। जी सचिन जी, आपसे एक सवाल मैंने और भी पूछा था जी कि 23 मई को आखिरी बारी बात हुई, उसमें जी। सोनम जी ने कहा कि हम अभी वाटरफॉल पर जा रहे हैं, और फिर ऑडियो कट आपकी जाता है। आपकी वॉइस कट रही है, थोड़ा सा वापस बोलिए। सर अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुन पाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हाँ हाँ बोलिए मैम। आपने 23 मई को कहा कि एक लास्ट ऑडियो क्लिप थी, उसमें सोनम जी ने बोला कि हम वाटरफॉल पर जा रहे हैं, फिर ऑडियो क्लिप कट गया। हो सकता है परिवार वालों ने सोचा होगा कि नो नेटवर्क जोन भी हो जाता है काफी जगहों पे नहीं इंडिया ऐसा में। ऐसा है नहीं, बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आई नो द एवरीथिंग। और हर कोई ये जानता है कि अगर मोबाइल स्विच ऑफ होगा, मतलब मैनुअली अगर हम लोग उसको स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच ऑफ शो होगा। अगर कवरेज के बाहर है तो अपना जो मोबाइल से जिससे हम कॉलिंग कर रहे हैं वो उसको सर्च करता है नेटवर्क को, उसके बाद वो कनेक्ट नहीं कर पाता है तो वो बोलता है कि कवरेज के बाहर है। और चारों नंबर्स, मतलब जो 4 मोबाइल थे उनके पास, चारों एक का एक वो स्विच ऑफ हुए हैं। ये मैनुअली स्विच ऑफ किए गए हैं, कवरेज के बाहर वाला तो कोई सीन ही नहीं बनता है। ये कब कब और स्विच ऑफ हुए, कितने बजे? ये 23 तारीख को शाम को हमने 5 बजे फोन लगाया था, उसके बाद फोन स्विच ऑफ आ रहा है। करीब 1:47 पे लास्ट राजा से बात हुई थी मदर की। उसके बाद करीब 5 बजे इन्होंने फोन लगाया था तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब वो मैनुअली स्विच ऑफ हुआ है, आप कवरेज के कह रहे बाहर हैं वाला कोई चारों के फंडा ही चारों नहीं। फोन, वो 4 फोन लेके गए थे अपने साथ, सारे फोन स्विच ऑफ थे? स्विच ऑफ थे। एक्चुअली उन लोगों का एक पर्सनल फोन था और एक बिजनेस फोन था, जी। और सोनम के पास भी एक पर्सनल और एक बिजनेस फोन था। तो चारों फोन स्विच ऑफ हुए हैं, कवरेज वाले बाहर का तो कोई फंडा ही नहीं है। और अभी कुछ चीजें मैंने देखी हैं, कल विपिन इंदौर आए हैं, तो विपिन रघुवंशी इंदौर आए हैं, तो उनसे मैंने कुछ फ्लीट का जो डेटा है, जो वहाँ का जो फ्लीट चलाता है, स्कूटर जो रेंट पे देता है, उसका डेटा हम लोगों ने थोड़ा चेक किया है। तो 1:47 पे जो कॉल हुआ है, उसके बाद 2 बजे वो लोग गाड़ी लेके निकले हैं जो स्कूटर है, और 2:04 पे जो गाड़ी की स्पीड थी वो 0 हो जाती है। तो जो इंसिडेंट है वो 100% 4 मिनट के अंदर अंदर हुआ है, और वो एक ही जगह घुमा है वो गाड़ी लेकर के। और उनका कोई पीछा कर रहा था, रोड से कोई पीछा कर रहा है, और उनको कुछ 2-4 लोगों ने 1-2 गाड़ी में घेर करके उनको उनको पीछा करके वो किडनैप किया या मारा है, जो भी किया हुआ है। और उसी के नेक्स्ट वो बॉडी भी मिली हुई है। ओके। तो ठीक है, सचिन जी, ये तो मैं ये एक, सुनिए, मैं तो है ना एक जनरल एक बोल रहा हूँ, लेकिन पुलिस अगर चाह, मैं तो पूरा चारों मोबाइल का जो डेटा था, लास्ट लोकेशन थी, वो निकाल करके सारी चीजें देख सकती थी। वो पता नहीं क्यों मेघालय पुलिस इस चीज में ढीला उन्होंने डाला हुआ है, क्योंकि साइबर अगर सेल इसमें चाहता तो बहुत सारी चीजें कर सकता था, और अभी भी कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है कि भाई चारों फोन की लोकेशन, और एक बीटीएस की जो रेंज होती है, अर्बन एरिया टेरेन है वहां पर, जो माउंटेन है वो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का टेरेन है, उस बीटीएस पर कितने मोबाइल एक्टिव हैं वो भी मालूम किए जा सकते हैं। और उन मोबाइल नंबर की जीपीएस लोकेशन देख करके भी पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन जो वहाँ पे पर्सन है, वो उनका मोबाइल नंबर एक्टिव है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन मेघालय सरकार और पुलिस बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं रही है, वो पूछ ही नहीं रही है किसी से कि भैया क्या हुआ है, क्राइम हुआ है। क्योंकि वहां पर है ना, बिल्कुल 5 मिनट में दंगे हो जाते हैं, ऐसा वो लोग खुद ही बोलते हैं कि हम लोग किसी से अगर पूछेंगे तो यहाँ पर दंगे हो जाएंगे। ऐसा तो उनके जो पुलिस के बड़े अधिकारियों का स्टेटमेंट है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। तो सचिन जी, अभी तक क्या बात करी है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने या पुलिस ने, आपको अभी तक क्या जानकारी दी है? देखिए, मेघालय गवर्नमेंट ने और पुलिस ने तो हमको बिल्कुल सपोर्ट किया नहीं है। थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं है, वो लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं करी है। क्योंकि बहुत कॉमन है, अगर मोबाइल का कवरेज के बाहर चला जाना तो वो बताएगा कि भैया मोबाइल कवरेज के बाहर है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हुए हैं तो उसकी लास्ट लोकेशन आएगी। उस लोकेशन के माध्यम से सारी चीजें वो लोग चेक कर सकते थे, पुलिस चाहती तो साइबर की मदद लेकर के वो उनकी लोकेशन निकाल करके फिर उनको ढूंढा जा सकता था। तो हेल्प तो करना चाहिए, इवन एमपी गवर्नमेंट भी कर सकती थी। एमपी सचिन जी, गवर्नमेंट आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जब परिवार को पता चला कि चलो फोन स्विच ऑफ है, तो देखिए 3-4 घंटे स्विच ऑफ रहा तो फिर भी समझता है बंदा कि चलो कुछ हो गया होगा या कहीं बैटरी ऑफ हो गई होगी। पर ऑब्वियसली जैसे जैसे दिन बढ़ता गया होगा तो परिवार को बहुत चिंता हुई होगी। कब उन्होंने ये मिसिंग पर्सन रिपोर्ट या कुछ रिपोर्ट दर्ज करवा पाए थे आप मेघालय पुलिस के साथ?
देखिए क्या है, 25 तारीख को, 23 तारीख को ये वाकया हुआ था, शाम तक फोन ट्राई किए थे, 24 तारीख को भी फोन ट्राई किए थे, और 24 तारीख को दोपहर को हमने डिसाइड किया था कि हम लोग मेघालय पहुंचते हैं, जाकर के देखते हैं। तो 25 तारीख को 11 बजे करीब करीब विपिन रघुवंशी पहुंच गए थे मेघालय। वहाँ के जो हम लोगों ने क्या, गूगल पे कुछ फोटोज वोटोज उन लोगों ने डाले थे, तो इमेज का बैकग्राउंड देख करके हम लोग ने जो सबसे पहले गाड़ी वाला जो बंदा है जिसने गाड़ी रेंट पे दी थी, उसको कॉल लगाया था कि आप ये दोनों बंदों को देखा क्या। तो उसने बोला था कि हमने इनको गाड़ी रेंट पे दी है, ये आए थे मेरे पास। तब हम सबसे पहले वो गाड़ी वाले के पास पहुंचे, फिर पुलिस के पास पहुंचे हम लोग, और मिसिंग की कंप्लेन दर्ज कराई थी 25 तारीख को। एंड सचिन जी, क्या पुलिस ने कुछ ये पूछा कि आपने लास्ट टाइम जब बात करी थी तो वो कहाँ जा रहे थे, किस रूट पे जा रहे थे? क्योंकि आपने अभी कहा कि बॉडी एक स्पेसिफिक पॉइंट के पास मिली है, राजा जी की जो बॉडी है, तो पुलिस ने ये पूछा था? उनसे ये मालूम पड़ा था कि ये लोग जो लिविंग ब्रिज है, डबल डेकर वाला जो ब्रिज है, ये उसके आसपास रुके हुए हैं, और ये पहाड़ी थोड़ा चढ़ रहे हैं, वहां पर ट्रैकिंग वैकिंग जैसे करते रहते हैं, तो ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं। बस ये लास्ट टाइम बात हुआ था सोनम से भी और राजा से भी, ये पहाड़ी चढ़ रहे हैं, और ऐसा करके बात हुआ था दोनों से। ओके मिस्टर रघुवंशी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन न्यूज़ सर। आपने बहुत कुछ ऐसा बताया है जो अभी तक हमें रिपोर्ट्स के द्वारा नहीं पता चला था। Punjay Das also with us is Mr. M.K. Meena. Mr. Meena, I want to understand from you, sir, from a police perspective, the fact that the family has lodged a complaint on the 24th of May, sir, and they have probably given a slight indication to the cops as well as to what was the plan of action for the couple. Where were they headed? What were their plans? Usually people do share such information with the family. You tell them that today we're going to go here, we're going to go there. And similarly, the Raghuvanshi family did have that information. Does it really make sense that it took so long for the body of Mr. Raja to be discovered, or does that indicate that the couple was probably being held hostage for a long time? In fact, until unless body of his wife is recovered, or then only we can say they can have sequence of events what exactly has happened, whether the jewelry which she was wearing, whether it is there or not there, what exactly evidences are there. But in fact, it is very clear that it is a case of negligence from Meghalaya police, because whenever tourists are there and all places, that there should be proper patrolling as well as police presence should be there everywhere, so that such incidents should not take place. It is a, like, body of Raja has been recovered. It is a clear cut case of murder as stated by Meghalaya police. Now, actually, what happens in that place, the George and this you know, it is highly raining there. It becomes very difficult to police to recover from those places. Why you have to blame Meghalaya police? Meghalaya police is one of the Mr. David, let him complete, sir. Mr. David, let Mr. Meena complete. If the incident has happened, murder has taken place. I don't like you tarnishing the Meghalaya police. Mr. David, please let Mr. Meena make his point, sir. Tarnishing Meghalaya police. They are doing their job despite this inclement weather. Despite this inclement weather, you come to Meghalaya and then you okay, see Mr. the David, rain. Mr. David, you have to let Mr. Meena make his point, sir. Don't Can we please tarnish mute Meghalaya Mr. David? police. Can we please mute Mr. David for now? Don't tarnish Meghalaya police. Mr. David, it's not a matter of tarnishing. Mr. Meena has a right to his opinion. Mr. Raghuvanshi, सचिन जी मैं आऊंगी आप पे. मीना जी प्लीज जल्दी 30 सेकंड में अपना पॉइंट खत्म करिए सर. In fact, I have seen each and every district of Meghalaya by road, so I know the topography. The issue is very clear. There was lapse on the part of Meghalaya police till murder is there. After murder, yes, they are taking interest as senior officers are doing their job. NDRF has also been launched. So now after incident there, we can't blame Meghalaya police. I'm only telling regarding crime. So now it becomes what Meghalaya police also, it is a terrain is very bad. You know, water is there, it is heavily raining. It becomes very difficult to reach those places and recover body. So it may take time. Like all agencies have to
work together, and body was this has to be recovered. When murder has taken place in a state, I only advise that there should be proper patrolling and police presence everywhere. If I can say data, around 2,000 of police persons there is shortage in Meghalaya police. The government should fill up immediately those, because police, if there is any shortage, 2,000, Yes. like there are sanctioned strength of around 13,000 and 11,000, around approximately 11,000 are there. If 2,000 more is there, then there will be proper police. So the government has to take action. Now, Okay. issue is very clear. Like police has to work together with central Okay, agencies, okay. I want to. with Okay. NDRF and recover Okay, body. okay, Mr. Meena. I want to bring in Mr. Ripunjay Das as well. Mr. Das, do you feel that somewhere this matter is becoming a little bit politicized, that people are wrong in questioning the security lapses in Meghalaya, or are they absolutely right in doing so? Mr. Ripunjay Das. Yes, can you please repeat the question? Yes, Mr. Das, what I'm asking is that somewhere there's a feeling a little bit amongst the people, as Mr. Sachin Raghuvanshi was also pointing out. He said that if you ask people there, they were told by the locals that it could lead to riots, it could lead to violence. Do you think that's a fair situation to be in, or someone needs to ask tough questions to the Meghalaya government, to the Meghalaya administration? See, the incident, whatever has happened, is still- totally unfortunate. But let us not jump the gun, first of all, because an investigation is underway. And none other than the Chief Minister of the state has taken serious note of the entire issue. We have heard in the regional channels today covering the issue quite in an elaborate way. And let the investigation be carried out. And and another aspect is that this is only, according to me, the 50% of the entire episode. The other part will be revealed only after the whereabouts of Sonam is found or traced or whatever it is. We pray that she is secured, but there is a very slim chance of that. But another point of view is that yes, every investigating agency has its own plus and minuses. And according to that, the police had started its investigation. Now, the Madhya Pradesh government is also taking quite a bit of interest. We know the MLAs today also, 4 MLAs, in fact, if I am not wrong, were in Meghalaya. So that is the way forward. Let us not jump the gun. We cannot blame at this point of time who is wrong, who is not there. Let us not start pointing fingers here. Let us just complete the investigation properly, and whatever the Chief Minister himself has assured that whatever needs to be done, he will do best. And this incident has, it's not that the people are rejoicing in Meghalaya over this. That cannot be the case. People are very much shocked, because this will also put up a question on the tourism sector overall. Now, people are now already started talking about maybe SOPs or not, which area to go or which area, what guidance they should take, and local communities involving them in the entire business. And this is the way forward, according to me, because I would like to repeat once again that the Chief Minister himself has stressed on a fair investigation after police had stated that Raja Raghuvanshi was murdered. It's a case of murder. Now, who murdered whom and who is it? That is definitely, we have seen several high-profile cases when our needle of suspicion is towards somebody and it ends up towards a very unusual person who we have never in the wildest of our dreams thought that he could be the murderer. So that is the way forward for me.
First of all, let the investigation be completed. Yes, the family has every right to demand higher level of investigations that the Chief Minister has assured. Second is that let the whereabouts of Sonam be found. And third is to cooperate and look ahead between both the states, Madhya Pradesh and Meghalaya, because we know Shillong has been known as the Scotland of the East. It's the best place because the Britishers had established their headquarters, their capital of the entire northeastern region in Shillong. So that is the way that it has its history, its tourism. The people are quite friendly in nature. I have been to that state numerous times, and we have our people there. Our many people across, we often interact with them. There are many things which take place in Shillong, and they're in collaborative way. There is, if we talk about various festivals at international levels are within hand without any kind of organizational glitch. Now, just a single incident has happened, which is, I again say that it's a total unfortunate, and we'll have to go to the root of the case. We have to find out what has happened. I want to leave 30 investigation process. No, you're absolutely right, and nobody should be jumping the gun or painting the entire Northeast with the same brush. That's a point absolutely well taken. Sachin ji, still with us. Sachin ji, last word to you, sir. 30 seconds हैं. आप कुछ कहना चाहते थे? Actually, I totally agree with Mr. Meena. This is the case of negligence by Meghalaya police and Meghalaya government. And what the Mr. Riji Joy says, the Scotland of India is now red. Today is red. वो पूरा खूनम खून हो चुका है. जो मेघालय पुलिस या मेघालय गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है कि टूरिज्म बहुत अच्छा रहेगा. अभी के बाद से मेघालय का बहुत नाम खराब हो रहा है. तो गवर्नमेंट अगर इसमें सपोर्ट नहीं करेगी तो मेघालय का नाम और खराब होगा. जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं पुलिस को, what Meghalaya police is do, I want the Meghalaya police taken a point and take the investigation by the point, and that's why we are demanding the CBI. Okay, वो तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे. ये लोग किस तरीके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो उनको भी नहीं मालूम है. कैसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए वो भी नहीं मालूम है. कैसे और क्या पॉइंट्स है टेक्निकल वो भी नहीं मालूम है. तो ये इन्वेस्टिगेशन कर क्या रहे हैं? they are searching blindly. They don't know the things where they go and where the sonam is going on. The jewelry is not present by the raja. और जो बॉडी जिस जगह मिली हुई है आप देखिए वहां से वो पैर फिसल के तो गिरेगा नहीं. वो वेरी स्लिपरी है और ये सारी चीजें, तो पैर फिसल के तो गिरने वाला नहीं है. वहां पर पूरा बाउंड्री वॉल है. वो पूरा करीब 5 फीट का बाउंड्री वॉल है. उसके बाद वो कूदेगा नहीं. किसी ने उसको फेंका है और वो भी दूसरी तरफ से. इवन जो एनडीआरएफ की टीम है वो पहाड़ के जो खाई के उस तरफ से जा करके उन्होंने फिर उतरा है, क्योंकि वो भी वहां से नहीं उतर पा रहे हैं जहां राजा की लाश मिली है. तो पैर फिसल के गिरने का तो कोई चांस नहीं है, इम्पॉसिबल है. और अगर हम लोग उधर पहुंचते भी नहीं, विपिन पहुंचता नहीं, तो हो सकता है ये केस अभी तक दब गया होता और वहां से निकलता भी नहीं है केस. इम्पॉसिबल है ये. तो मेघालय पुलिस को और गवर्नमेंट को पूरा टेक केयर करके पॉइंट, हम ये नहीं बोल रहे कि मेघालय पुलिस काम नहीं कर रही है, बट उनको एक सिस्टम से, एक तरीके से काम करना चाहिए. Okay, all right. That's also a fair point being raised by the family who's suffered the loss of a loved one. Unfortunately, he was on his honeymoon in Meghalaya. But with that, we've run out of time, and I thank all of our guests for joining us on the broadcast to take this important discussion forward. We step into a very quick break.